Check. Okay. हाँ? I don't even know. आप बैठो, आप पास में बैठो, यहाँ आ जाओ। सर आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ। लेट द स्कूलर बीन आपने वो डाला? दोनों आ गए क्या? दोनों आए? दोनों आए? ओके, ना देखो। ओके, हेलो। सर इसमें कौन सा है फाइल? मेरे को लैपटॉप दो। ऊपर ही और अपना अरे उसको दे देना, गौरव को दे दो ना, पकड़ गौरव। फाइल हाँ। सो टीम सुपरस्टार
एंथम नेशनल एंथम नहीं उसको रेडी करने बोल रहा हेलो वो कहाँ गया आपका बट आवर एजेंडा इज टू असेंबल द टीम प्लेयर्स तो उनको लाइन में खड़ा कर दो हेलो requesting both the teams to please queue up separately both the teams चलेगा ठीक है हाँ दो ही टीम है ना चार किधर हाँ कहाँ है we also wanted the men's team to be queuing up but since they are not here only the women team where are the men's team Please, all of you stand up for the national anthem. Kindly raise for the national anthem. Sound. 1, 2, 3. Start. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you so much. I would request Mr. Michael and then followed by Mr. Balu on behalf of the EPL organizing committee to address the players before we start the final day of EPL Box Cricket 2022. उधर ही ऐसे नहीं बोलना यहाँ पे ऐसे कोना में नहीं बोलने का Please all the kids and guys please Sasha come नहीं 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 पूरा बुलवाएगा तुमको ऐसे थोड़ी एवेंजर्स के कैप्टन को छोड़ेगा ये लीजिए Thank you, Shankar. Mr. Sunil Singhania, Chairman. Mr. Sri Shankar, Secretary. Managing Committee members. EPL Committee members. Ladies, gentlemen, boys and girls, good evening. After 2 years of no real activity, this EPL has been a big change. We are in the 5th edition of EPL. The pandemic has given us some time to make changes. This year, we streamed live all the matches with the help of a multicam setup with instant replay and erected a giant screen for the spectators to view the matches. These were some of the highlights of the EPL 2022.
We had this EPL, new owners, some sponsors, new ones, and a lot of new faces. The result was an awesome EPL. I'm sure you'll all agree. With beautiful games and nail-biting finishes. While we were enjoying the games, the real stars were sweating it out in the middle. I would like to put your hands together for all the players who participated in this EPL. Let's not forget the sponsors, the EPL committee, the technical crew, JLL staff, and all supporting this event. Last but not the least, the person behind the scene. Let's put our hands together for Sri Shankar, who worked tirelessly to get us here. All the best for the teams playing today's final. To take you through the evening, I'll hand over the mic to Mr. Balu. Over to you. Thank you. Thank you. That was a very well summarized. I don't have more to add to this. I think it was a fabulous event. I think we're going to witness a wonderful game now between boys and women's team that's going to play first. I would like to thank everybody who's there, Gaurang and team, Vinod and team, Shailesh and team, multiple people who have supported in making this EPL a grand success. 2-3 important aspects. We've got more than 150 reviews over 25 matches. I think that's an important milestone for this EPL, which gives us a fair decision for a team to win out here. We have close to 7,200 views on YouTube, 1,000 hours of video being streamed across. I think this is just a stepping stone to make this event more bigger and brighter. Thanks to everybody out here. I hand over my mic to Mr. Sunil Singhania to take it forward. Thank you. No, I think we are ready. Thank you, the gorgeous women and the future of our society, the young kids. Play well and have a nice match. Thank you. Thank you. Hello. Okay, we will do the introduction of owners and sponsors later. We will have the toss for the ladies come kids to start with. Who's won the toss? Huh? Superstars won the toss and elected to field. Just to tell you, it is a match of 8 overs of 2 innings. So, we will have to wait for the result after the 2 innings. Okay. I would request both the team's captains to come and give their squad of playing 7 or 8. I would request
both the team's captains to come here and give their squad of 7 or 8. I hope the captains are listening to this. I would request the team's captains to come here and give their squad of 7 or 8. Can you, Mrs. Thakur, you can come here. हाँ? Okay. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, वो बाद में करेंगे, ठीक है? मैं सिर्फ फाइनेंस यहाँ पर Team Superstars captain, 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 can you please come here and give your final playing team? हाँ क्या चाहिए कौन नहीं खेल रहा बता रहे हो कौन नहीं खेल रहा है All the best to you. Chargers. One player. Chargers, one player here, please. Who are playing? Chargers. Are you come here? Batting. कौन बैटिंग कर रहा है? Shashwat, who's batting and who's a runner? Striker. Striker first. Arush is the non-striker, and who's the striker? Just Soda. Okay. Bowling. Who's bowling? Parth is bowling. Okay. Let's have the women's kids EPL 2022 start. Umpire. Should we start? Okay. नया बॉल दिया है कि नहीं? नया बॉल है? Okay. Done. Okay, just to face Parth. It's a 8 over each. Everybody has to play 8 overs till they get bowled out. Start. Okay, 1 run to Josh. Arush will face Parth to ball again. It's a no ball.
Pass to ball again. अंपायर का इशारा, नो बॉल. Okay. It's a 4 by Arush. So it's 6 for no loss after 2 balls. Six for no loss after 3 balls. It's a 3, so it's 9 for no loss after 3 balls. It's after 4 balls. One run by Arush. 10 for no loss after 5 balls. Charges. Pass to ball his last ball of his first over. It's a wide ball. Part to ball is last over, last ball. Just has one ball, one run. So it's 12 for no loss at the end of first over. Who's the bowler? Huh? Raghav is the second bowler. "12 for no loss at the end of 1 over. It's a no ball, and they have got 1 run more. अंपायर का So it's इशारा, नो बॉल. 14 for no loss. Just took a single. अंपायर का इशारा, नो बॉल. Good ball. He's balled. The score is now 10 for 1 wicket. Arush is bowled by Raghav. Who's the new batsman? Adi. Advait. Advait is the new batsman. Advait Vaishnav. One dot. Same rules, no?
2 dots. Parth has taken the catch. Advait is out of Rogao. So the score is 5 for 2 at the end of 1.5 overs. Who's the new man? New player कौन है? Ryan नहीं Ayan. Ayan Sinha new player. Ayan Sinha is It's a white ball. It's 6 for 2 now at the end of 1.5 overs. One run to Advait. Oh, who's Advait? I mean, he's gone. It's Ryan. Ayan Sinha. At the end of 2 overs, can you hold the game for a minute? Just hold on for a minute. Hold on for a minute. Who's the bowler's name please? Who's the bowler? Huh? Kanta is the bowler. Come on, let's start. 7 for 2 at the end of 2 overs. One run Ayan. Ayan has got a single. It's 8 for 2 at the end of 2.1 overs. Dot ball. One dot, huh? One run to Josh. It's 9 for 2 at the end of 2.3 overs. Bowled. Ayan is bowled. The score is 4 for 3 at the end of 2.4 overs. Hey Kailash, Shailesh,
शर्म कर उसका बॉलिंग देख तेरा बॉलिंग देख Batsman's name, please. देख Batsman's name, please. Parth. Who's the batsman? Mannat is the new batsman. 2.4 overs, 4 for 3 for team charges. Dot ball. Dot ball. Mannat is bowled. The score is -1 for the loss of 4 wickets at the end of 3 overs for team charges. 3 overs, -1 for the loss of 4 wickets. The new batsman is the captain herself, Birju Thakur. Just to tell, once the 6 wickets fall, then the team is all out. Two declare. It's a 2 declared to Jash. The score is now 1 for the loss of 4 wickets at the end of 3.1 overs. No ball. It's a no ball. It's अंपायर का इशारा नो 3 बॉल for 4. It's 2 for 4. Sorry. कौन लिख रहा है? 3 कैसे लिखा? पहले. It's a dot ball. One run to Josh. 1 run to Jash. It's 3 for 4 wickets at the end of 3.3 overs. No ball. So no ball. 4 अंपायर का इशारा for नो 4 बॉल at the end of 3.3. One run. 1 run to Birju Thakur. It's 5 for 4 at the end of 3.4 overs. No ball. So no ball. It's 6 for अंपायर का 4 इशारा at नो the end बॉल of 3.4 overs. It's a free hit. Is it out? Jash Soda has hit it out. The score is 1 for 4 at the end of 3.5 overs. Ball, please. Ball, sir. नहीं नहीं. Ball. वहाँ से नहीं
नहीं मिलेगा, नहीं नया बॉल मत दो यार। हाँ सर, थोड़ा नया बॉल नहीं मिलेगा। दूसरा है वो वहाँ पर प्रैक्टिस बॉल होगा बस। दूसरा नहीं है। हाँ वहाँ प्रैक्टिस बॉल से लेगा। अरे वहाँ जाके वो थोड़ा एम्पायर को बोलो ना, थोड़ा सा हिले यार, वहीं पर खड़ा रहते वो लोग। हाँ नहीं हाँ हाँ क्या कह रहे, क्या कह रहे, स्क्वायर स्क्वायर पार्टी रखा है, कौन स्क्वायर? एक मिनट मैं सुनील को दे रहा हूँ, मैं बात कर। क्या हुआ? Umpire, umpires, keep the new ball with you and you can use the practice ball. लेकिन अंपायर वो बॉल दे देना. उसको समझ नहीं आता। One run to Birju Thakur. One run declared. Three for the loss of 5 wickets at the end of 4 overs. It's a 8-over game and they have one more wicket to go. Parth is the new bowler and Payal is batting. Parth is the new bowler and Payal is the batsman. He's out. Caught by Master Murarka and कौन? ये एकदम छोटा छोटू एकदम। जिहान। caught by Jihan of Parth. The score is -2 at the end of 4.1 overs with all the wickets gone. They had only 7 players, so once they have 6 wickets gone, then the match for that innings comes to a close. The next team to bat. The team superstars have to bat now. They have to bat for the entire 8 overs. Yeah. And if they get all out before that, then we will look at the run at the end of their innings. Or they have to bat out their entire 8 overs. So inning number 2, superstars to bat. Their opening batsman name, please. I think on the non-striker it's Raghav, and the opener on the strike is Jihan.
May I have the batsman's name? Jihan and Raghav. Jihan and Raghav are the opening pair of superstars. It's -2, -2. But you have to bat out for the entire 8 overs. So Jihan is going to take the strike, and Advait will be the opening bowler for Team Chargers. Umpire says play. Nicely played by Jihan. It's hold. It's a dead ball. So we start over again. Advait will be bowling the first ball for Chargers. So here we go. Advait to Jihan. Nicely played and good fielding by Birjo. It's a dot ball. Birju Thakur, captain of Team Chargers. Nicely played by Jihan. Well fielded by Birjo, but couldn't stop a single. So Team Superstars open their account with 1. So there's slight field play change. Birju Thakur comes on the log on. And Jashan, he moves up. Advait. It's a no ball, says the umpire. अंपायर का इशारा, नो बॉल. It's a no ball, free hit. So with this, the score moves to 3. So Team Chargers are 3 without no loss. Advait with his next delivery, just on strike. Nicely played, well fielded by Advait. A dot ball. Advait again ready. Very well played, this time by Jashan. Nicely driven to mid-off, but can't stop a. Nicely fielded by Ayan. Couldn't stop a single though. Score of Team Superstars moves to 4 without any loss. Advait ready with his another ball. And this time Raghav on strike. Nicely played by Raghav. Birju Thakur couldn't stop the ball. So it's the first boundary for Team Superstars. So with this boundary, Superstars moves on to 8 without any loss of wicket. Advait, Jashan, Birju Thakur discussing about how to stop this attacking game of Raghav and Jihan. So again a field change. Birju Thakur now is going to keep the wickets, and Jash is come on long on. Raghav ready. Nicely played by Raghav. This time again a boundary. No chance for Ayan and Jashn to stop this boundary. Back to back. 2 boundaries by Raghav. At the end of the first over, Team Superstars is 12 without any loss.
New bowler is Josh. He'll be bowling for Chargers. Over number 2. Just Shoda. Jihan on strike. Jihan and Raghav playing very beautifully for Team Superstars. Again, a very well played, very good fielding by Aditya. Advait. Dot ball. Bowler is just Sodha. Very well played by and equally well fielded by Ayan this time, but couldn't stop a single. So with this single, Team Superstars moves to 13. I think it's a hit wicket. Raghav is out. He's hit his own wicket. So the first wicket falls of Superstar. And now the score of Team Superstar is 8 runs. 8 for the loss of 1 wicket. New man in is Parth. Parth is the new man in. He'll be taking the strike. Josh. The bowlers for Chargers. Josh is all set to bowl his 4th ball in the 2nd over. And this time, though the ball is hit the wicket, but the bails are not off. So it's a dot ball. It's not a wicket, but it's a dot ball. The bails didn't fell down. Bails has to be dislodged. This time, but this time is taken the bails off. Fantastic bowling by Jasoda. Takes his 2nd wicket. So now Team Superstars come down to 3 runs. So at the end of 1.4 overs, 1.5 overs, it's 3 runs for Team Superstars. So it's one more delivery to be bowled by Josh. Very well played by Team Chargers. So now Team Superstars are under pressure, and now the captain leads from front. Indrani comes out in the middle of Team Superstars. So at the end of 1.5 overs, Team Superstars are 3 for the loss of 2 wicket. Indrani on strike now. She is the captain of Team Superstars. Josh bowling his last delivery to Indrani. This is a dot ball. So at the end of 2 overs, Team Superstars are 3 for the loss of 2 wicket.
So the new bowler is for Chargers is Arush Javeri. He'll be bowling over number 3 to Jehan. Very well played, though equally well fielded by Advait. It's a dot ball. Nicely played over the covers. Jehan is playing very well for Team Superstars. It's 2 declare, says the umpire. So I think Jehan will bat again because it's a 2 declared run. So with this 2 runs, Team Superstars moves to 5 for the loss of 2 wicket. And Jehan is batting on 5. Nicely played by Jehan this time for a single though. Score moves to 6 for the loss of 2 wicket. Nicely played by Indrayani. Very well taken single by Indrayani and Jehan. With this single, Team Superstar moves to 7 for the loss of 2 wicket. Very well played by Jehan. Oh, just a very slight miss. Or else it would have been a trouble for Jehan. Oh, so it's 1 declare. So it will be 2 runs for Team Superstars and for Jehan. With this 2 runs, the score moves to 9 for the loss of 2 wicket after 2.5 overs. 1 delivery to go. Nicely played by Indrani. 1 run for Team Superstars. So at the end of 3 overs, Team Superstars are on 10 for the loss of 2 wicket. This is after 3 overs. Now over number 4 will be bowled by Advait. Indraini on strike for Team Superstars. A slight discussion between who's going to bowl this 4th over. I think it's Advait. But some serious discussion going on between Advait, Jash, Mannat and Birju Thakur. So ultimately Jash has taken the charge. And this is a super over. And this all the runs are going to get double. The wickets are going to get minus by double again. This is a wide. So wide plus 1 added to Team Superstars. So at the end of 3 overs, it's 12 for 2. Just ready to bowl his another next delivery. Indrani ready. Nicely played again on the square leg region. 1 run. 1 plus 1. Team Superstars moves to 14 for the loss of 2 wicket. Beautifully played by Jehan. Nicely fielded by Advait. A dot ball. Very well bowled by Jash. 2 dot balls this time. It's 2 dot balls to Jehan. He has to take a single out of this. Very well played by Jehan this time. Played over points. The score moves on to 16 for the loss of 2 wicket at the end of 3.4 overs.
Nicely played by Indrani. 2 runs added to Team Superstars. They move on to 18 for the loss of 2 wicket. Very well played by Jihan this time. Mid off. Ayan fielded for only single plus 1. So it's 20 at the end of 4 overs. Team Superstars. Over number 5 will be bowled by Advait, I think. This is EPL 2022. This is a match between Team Superstars and Team Chargers, women and kids. This will be a match of 2 innings and 8 overs with all the rules which have been played in EPL Premier League. We thank our sponsors MSF, Darwin, YRS and all the team owners of Team The Legends, Superstars, Bounce, Freestylers, Selective 11, Black Rock, Nike Warriors and Team Chargers. We thank all the sponsors to make this happen. And EPL 2022. Okay, so we start with the match again, and over number 5 will be bowled by, let's see who's going to come. Is it Ayan, Jash, Advait? Yes, so ultimately Advait will be bowling over number 5, and Jihan is playing very beautifully. Advait over number 5, Jihan ready? Very well played by Jihan for a single. With this single, Team Superstars moves to 21 for the loss of 2 wicket. Advait to Indrani. Oh, she's loved the ball in no man's land. Takes a single. Score moves on to 22 for the loss of 2 wicket. It was a dot ball. Advait to Jihan. Beautifully played this time. Just lofted over covers. Taken a single. So with this single, Team Superstars move to 23 for the loss of 2 wicket. This is over number 4, 4.4. Advait to Indrani. Very well bowled. It's a dot ball. 1 ball to go in this over. It's a no ball, says umpire. It's a free hit. With this no ball, Team Superstars move to 24. Birju Thakur comes to Advait for some tips. It's a dead ball, says the umpire, because the players were not ready. Birju Thakur was not ready. Advait to bowl his last ball for over number 5. Indrani, and this is up in there, and this time Arush Javeri takes the catch, but see, it was a free hit because the ball before this was a no ball.
So it was a free hit. So Indrani is saved. She's not out. So at the end of 5 overs, score moves to 24 for the loss of 2 wicket. Team Superstars. Over number 6 will be bowled by Ayan. Ayan is the new bowler in. He'll be bowling his 6th over to Jihan. Jihan is playing very beautifully. He's at the moment batting at 14 of 17 balls. Beautifully played over the covers by Jihan. He's playing extremely good. Jihan has moved to 15 out of 18 balls. With this 1 run, Team Superstars moves to 25 for the loss of 2 wicket. Very well played by Indrani. Indrani takes a single to take her score to 8, and for Team Superstar is 26 for the loss of 2 wicket. Ayan ready to bowl to Jihan. Beautiful stroke. Oh, well tried by Jash. But couldn't stop a single. With this single, Jihan moves to 16, I'm sorry, and Team Superstars on 27 for the loss of 2 wicket. Beautiful piece of cricket by kids and women's here in EPL 2022. This is a white ball, says our umpire. Very well played by Indrani. To mid-off. Takes the single very comfortably. With the single, Indrani moves to 9 and Team Superstars move to 29 for the loss of 2 wicket. Very well played by Jihan. It's a no ball, says our umpire. Okay, it's no ball plus 1 run, so it's a free hit. अंपायर का इशारा No plus नो 1. बॉल With this no plus 1, the score moves to 31. I am ready to bowl his next delivery. Very well played by Indrani on fine leg. Takes a single. With the single, the score of Team Superstar moves to 32 for the loss of 2 wicket. This is over number 6 in progress. Good, very well played by Jihan on mid-on region. Advait cuts it off, but couldn't stop a single. So at the end of 6 overs, Team Superstars is 33 for the loss of 2 wicket. Indrani is batting on 10 and Jihan Poddar batting beautifully on 18 of 21 balls. Next over will be bowled by Birju Thakur. Birju Thakur to bowl to Jihan. This is over number 7. Very well played by Jihan. It's declared it's 3 runs to Jihan. With this 3 run, Jihan moves to 21 and Team Superstars moves to 36 for the loss of 2 wicket. Birju Thakur to bowl to Jihan. This is over number 7. Birju Thakur to bowl to Jihan. This time again. He's playing this loft shot very well. Jihan over covers. With the single to Jihan, it's 22 for Jihan and 37 for Team Superstars.
It's a batting penalty for Jihan because he left the crease before the ball was been bowled. So it's a dot ball. Minus. It's 1 - 2. Yeah, so it's 21 for the loss of for Jihan. It's a no ball. It's a free hit. अंपायर का इशारा नो बॉल. It's a no ball again because I think this time the umpire saw अंपायर का the इशारा ball नो was बॉल. over the waist height. Nice call by the umpire. Birju Thakur to bowl. Very well bowled. This time it's a dot ball by Birju Thakur. It's a no ball again over the waist height. अंपायर का इशारा नो बॉल. It's 39 for the loss of 2 wicket. Very well bowled this time by Birju Thakur. This is first dot. Very well played by Indrani. Very well bowled by Birju Thakur. It's 6.5. Umpire, it's over. Says our scorer, it's over. It's over. Over. So at the end of 7th over, Team Superstar is 40 for the loss of 2 wicket. Jihan is playing beautifully on 21 in 23 balls, and the captain Indrani Bakshi is on 11 of 19 deliveries. So the last over for Chargers will be bowled by either Ayush or Ayan. Or Jash, I think it's Ayush Javeri. Arush Javeri, I'm sorry. This is the last over of first innings. What's the bowler's name? Is it Mannat? Mannat, okay. So Mannat will be bowling the last over for Team Chargers. Team Superstars are on 40 for the loss of 2 wickets. Jihan Poddar on 21 of 23, and Indrani Bakshi, the captain of Superstars, on 11 of 19 deliveries. This is over number 8. Mannat will be bowling to Indrani. Very well played by, and equally fielded, very well fielded by Advait. A dot ball to begin with in this last over. Again, nicely played on square leg region. Takes a single. With the single, Team Superstars moves to 41 for the loss of 2 wicket. Very well played by Jihan. Takes a single. 42 for the loss of 2 wicket. Very well played by Indrani on the square leg region. The captain leading from front. 43 for the loss of 2. Indrani Bakshi on 13 of 22 deliveries. Jihan on 22 of 24 deliveries. Mannat ready. Again a loft. Ayan is under it. No, but he couldn't take that catch. With this, Jihan hits another boundary. With this another boundary, Jihan goes to 26 of 25.
And Team Superstars on 47 for the loss of 2 wicket. Very well played by Jihan on the square leg region. So at the end of 8 overs, Team Superstars are 48 for the loss of 2 wicket. Jihan Poddar beautifully not out on, played beautifully. Jihan Poddar he made 27 of 30 deliveries, and Indrani Bakchi made Indrani Bakchi made 13 of 22 deliveries. So now we start with inning number 2. Chargers will be coming to bat. And they have to chase this target and set a lead for Team Superstars. Team Chargers made -2 and they were all out in their first innings, after which Team Superstars, they played beautifully. Jihan, their star player, and the captain Indrayani Bakchi, they made 48 for the loss of 2 wicket. So now Team Chargers have to come again to bat. This will be the second innings. So we'll take a short break and we'll come back with the inning number 2 for Team Superstars and Team Chargers. Team Superstars, kindly come on the ground, on the turf. We have to play inning number 2. Also requesting Team Chargers to send their batsmen, their opening batters. Calling the players of Team Superstars, they have to play the second innings, they have to field. Calling Team Superstars on the field, they have to play the second innings. We'll come back in a while with innings number 2 of Team Superstars and Team Chargers in this EPL
2022 Women's and Kids match. And after this, the grand finale between Team Superstars and Team Chargers of EPL 2022. This match is going to be a cracker final. Requesting Team Chargers to send their batsmen in for the innings number 2
and superstars, fielders to kindly set their field.
Josh. It's a no again, and Arush has played over extra cover. It's अंपायर का no इशारा, plus 2. नो बॉल. So 3 runs for Team Chargers. It was a free hit, so is not out. Score 8 for no loss for Team Chargers. Umpire says it's a white ball. It's 2 declared, says umpire for Team Chargers. Arush. It's a dot ball. Correct. 2 dots. So at the end of 1 over, Team Chargers is at 11. Second over by Kanta Prajapati to bowl for Chargers. Over number 2, and just to face for the first delivery of Kanta Prajapati, I'm sorry. It's a no ball. Nicely played by Josh over covers. अंपायर का इशारा, नो बॉल. 2 runs. So with this 2 runs, Team Chargers moves to 13 for the loss of no wicket. For no loss, I'm sorry. Very nicely played by Arush. Finds a fielder on mid-off. With this 1 run, score Chargers moves to 14 for no loss. Kanta Prajapati to bowl her next delivery for Team Chargers. Nicely bowled. Oh, very well played by Josh. Nicely drive by Josh. With that single, Team Chargers move to 15 for no loss. Nicely played by Arush. Equally well fielded by Parth. On long on. 16 for no loss. Chargers in their second innings are playing very, very positive. Very well played, equally well fielded by Parth. Raghav. A dot ball by Kanta Prajapati. Nicely played by Josh onto square leg region. A single. With that single, Team Chargers moves to 17 for no loss. This is over number 2. Very beautifully played. Very nicely fielded by Parth on long on region. Arush looking very, very confident and positive. Nicely played by Josh. Oh, there was a slight misunderstanding between while taking the run. So with that single, Chargers moves to 19, 20.
at the end of 2.2 overs. This inning for Chargers, they are very determined and they are going great guns. Runs are coming pretty fast. Very nicely played by Arush. Single. Parth is the new bowler. It's a no ball, says umpire. Free hit अंपायर का इशारा to batsman no ball. Just. Nicely driven by Jash onto mid-off region. That single Chargers moves to 23 for no loss. Beautiful game, very well played by Arush. Takes a single. With that single, Chargers moves to 23. Jovis 24. Nicely played again by Jash. 25. At the end of 3 overs, Chargers are 25 for no loss. Now Siddhant, Captain Indrani, is deciding who will bowl the third over, fourth over. So the new bowler, Shashwat Murarka, he'll be bowling the fourth over, number 4. Chargers are 25 for no loss. Shashwat bowling his fourth over in this second innings. Well bowled by Shashwat. A dot ball to begin with. Score remains on a second dot ball. Score remains on 25. This time, just takes a single. Score for Chargers moves to 26 for no loss. Shashwat bowling the fourth over. Very well bowled by Shashwat. Equally well played by Arush. Takes a single for team Chargers. With that single, Chargers move on to 27 for no loss in this fourth over. Very well played again by Jash. Now this is a totally different Chargers team. They are very focused, playing very aggressive. Very well played by Arush. Played over covers. So at the end of fourth over, Chargers are 28 for no loss. $29, I'm sorry. 29 for no loss. So over number 5 will be bowled by Siddhant. It's a power over, says umpire. So captain has decided to call Raghav to bowl this power over, because this will be a very crucial over for team Chargers and equally crucial for team Superstars. He's bowled him. Raghav has bowled Arush.
So straight away, the score comes down to 19 for 1. So the think tank, captain of Superstar, Indrani Bakshi made a very right choice by getting Raghav to bowl the super over. New player is Ryan. No, I think it's Advait. Advait is the new man in. Advait. Advait is a new man in for Chargers. Chargers are 19. It's a white ball, says umpire. Very well played by Advait. Takes a single. Raghav. So the score is 23. Very well played. A dot ball. It's a first dot. Very well stopped by Raghav. Second dot. This has been called for a referral. Josh was at the bowler's end. So our third umpire is going to have a very close look whether Josh is out or no. Batsman is out. So the batsman is out, says our third umpire. So another wicket falls for Team Chargers, and this is a super over, so it's minus 10. So the score now, it's 13 for the loss of 2 wickets. Raghav. Very well bowled by Raghav. Beautifully bowled. It's one declare, so 2 runs. 2 runs will be added. So at the end of 5 overs, Team Chargers are on 15 for the loss of 2 wickets. The new bowler is Shashwat Murarka. He begins with a wide. Chargers move to 16. It's lofted, very well fielded by Raghav. It's a dot ball. Nicely played by Advait in the square leg region. 1 run taken by Advait. Chargers move on to 17 for the loss of 2 wickets. Ayan is the new man in. Ayan Sinha. Very well played by Ayan on square leg region. 1 run. With that 1 declare. It's 1 declare, so Ayan will have to go to the strike.
He'll take the strike. Score moves on to 18 for the loss of 2 wicket. 18 for the loss of 2 wicket. Shashwat bowling his 6th over. And ready. White ball, says the umpire with this wide. Chargers move on to 19. Good shot by Ayan. On to the square leg region. 1 run. 19 for the loss of 2 wicket. 20, I'm sorry. It's a no ball and a free hit now. अंपायर का इशारा, नो बॉल. 21 for the loss of 2 wicket. It's again lofted, and this time Advait clears the boundary. First boundary for Advait. Chargers move on to 25 for the loss of 2 wicket. At the end of 5.5 overs. Again a lofted shot by Advait. A single to add on to the score. 26 for the loss of 2 wicket at the end of 6 overs. Chargers are trailing by 24 more runs. Because they had made -2 in their first inning, and Superstars in their first inning they made 48. Again a lofted shot, and this time Raghav drops it. 1 run to Chargers. Teams move on to 27 for the loss of 2 wicket. It's a no ball, says the umpire. So it's 1 run added. अंपायर का इशारा, So नो 2 बॉल. runs added in the score tally. It's 29 for the +1. A dot ball. Parth is the bowler. It's a no ball again, and this time it's 3 declare अंपायर का plus इशारा, no. नो बॉल. So it's 4 runs added to the tally. 33 for the loss of 2 wicket. It's a no ball again. This time Raghav takes the catch, but it was a free hit plus it was a no अंपायर का ball. इशारा, नो बॉल. So Advait stays 34. Nicely played by Advait. Very well fielded by the captain of Team Superstars, Indrani. Very well bowled by Path. 2 dots for Ayan. So he has to take a single in this ball. Very well played by Ayan on square leg region. .35 for the loss of 2 wicket. 36 for the loss of 2 wicket at the end of 7 overs. So this is the last over for Team Chargers, and it will be bowled by
It's a dot ball. So in this last 5 balls, Chargers have to bowl score at least 14 to equal the score of Superstars. Kanta Prajapati to bowl the next delivery. And this time, let's wait for umpire's decision. It was 3 dots, so Ayan is out. So from 30. So the score now is 31. So in this next 3 deliveries, they have to make at least 16 to equal the score of Team Superstars. 19 to equal the score of Superstars. Last 3 balls to be bowled by Kanta Prajapati. So now for Team Chargers, the captain comes in the middle, Birju Thakur. So Kanta Prajapati to bowl to Birju Thakur. She's out. She's bowled her. So now, score of Chargers is 26 for the loss of 4 wickets now. Beautiful ball bowled by Kanta Prajapati. Mannat, the new player in. अभी ऑलरेडी -24 है आप चार्जेस Ooh, it was a hat-trick wicket ball. Very well played by Mannat. So last 2 deliveries. It's a no ball. 1 run added to Team Chargers. It's a free hit. अंपायर का इशारा नो बॉल. This time, Mannat hits in the declare zone. So at the end of 8 overs, Chargers is 29 and they are minus 21. Indrani Bakshi, the captain of Superstars, can you just come near the mic, please? Near the console.
Okay, so we have team Chargers on the field. May I request team Superstars, the opening batsmen to kindly come, and Chargers to set their field because we have the grand finale of EPL 2022. Chargers, I request the captain of Charger, Birju Thakur, to kindly set their field. Request umpires to kindly start the match. We have the grand finale awaited after this match, after this innings. Okay, so here we start the inning number 2. Superstars to bat. Chargers are at minus 21 and your total score is 27 and you had to make 48. So the difference, what is there? All right. So Chargers has to take maximum wicket. Then only they will be adjudged winner. Okay. So can I call the captain of Chargers and Superstars? Okay, so here we start inning number 2. Advait to bowl for Chargers and Jihan, the opener, Jihan and Raghav. Jihan is the opener for team Superstars. Advait begins with a wide. Score is 1 for team Superstars. Very well played by Advait. A slight deflection from the umpire leads for a single. Score moves to 2 for no loss for team Superstars. This time Raghav hits it on the fence. He clears the boundary. Umpire declares it as a 4 runs. So Superstars move to 6 for no loss. Well played by Raghav. Takes a single, moves to Superstar, move to 7.
for no loss. Very well played by Jihan or mid-off region. Good try to hit him out, but unable. Jihan takes single. With that single, Team Superstars moves to 8 for no loss. It's a no ball, says umpire. And a single. अंपायर का इशारा नो बॉल. It's a free hit now, so 2 runs added to Team Superstar. It's 10 for no loss. Very well played by Jihan. Again over mid-off. 11. Again, this time he puts up and just tried to catch the. Tried a lot to catch, but it fell short with that single. And at the end of 1 over, Team Superstars is at 12 for no loss. Over number 2 will be bowled by Jash. Raghav to take the strike. Over number 2 will be bowled by Jash. Oh, it was a catch, a miss. Dropped by Arush. So score moves to 13 without any wicket. This time, Jihan. Very well bowled by Jash. He bowled Jihan. So with that wicket, Superstars come down to 8 for the loss of 1 wicket. If Chargers have to win, they have to take maximum wickets. So the new player in is we are waiting for the new player of Team Superstars. It's going to be Parth. Parth is a new player in. Very well bowled by Josh. This time, and it's a 6-run hit by Parth. This is the first 6 of this innings as well as this match. With that 6er, Team Superstars move to 14 for the loss of 1 wicket. It's a dot ball, 1 dot. Nicely played by Parth over mid-off region. Score moves to 15 for the loss of 1 wicket. Our scorer says it's over. So at the end of 2 overs, Superstars are on 15 for the loss of 1 wicket. Next bowler is Arush Javeri.
Bold, bold. Arush has taken in the first ball, has taken that wicket of Parth. So now Team Superstars, they come down to 10 for the loss of 2 wicket. So the new player in for Team Superstars will be the captain herself, Indrani Bakshi. Siddhan, Arush to Indrani. Very well played. Taken a single. With that single, score moves on to 11 for the loss of 2 wicket. Oh, this time it's a boundary. Just tried to stop it with the leg, but it got deflected and went past the boundary. So with that boundary, Superstar moved to 15 for the loss of 2 wicket. Raghav playing beautifully. Very well played by Raghav. Takes a single. It's a white ball, says umpire. Very well fielded by Advait. Dot ball. Well played by Indrani in the square leg region. With that single, they move on. The Team Superstars move on to 17 at the end of 3 overs. So at the end of 3 overs, Superstars are 18 for the loss of 2. It's a power over, and the power over will be bowled by Jash. Now this over is going to be very, very crucial. If Superstars lose couple of wickets in this, it might be a negative impact on their scoring. But Jash begins with a white ball. So 2 runs have been added in this first delivery, a wide +1. Indrani takes a single +1, so 22 for the loss of 2 wicket. Very well played by Raghav. A very sensible batting. Well played by Raghav again. Couple of runs more added in the score of tally of Superstar. It's 24 for the loss of 2. Very well played by Indrani. The captain leading from front. 26 for the loss of 2 wicket. It's a no ball. So score moves on to 28. It's a free hit. It's a no ball again. 30. Free hit continues. No ball.
32 for the loss of 2 wicket. And then it takes a single. With that single plus 1, score of Superstar move to 34 for the loss of 2 wicket. Over number 5 to be bowled by Ayan. It's a no ball, says umpire, and taken a single. So अंपायर का इशारा, no ball. Superstars move on to 36 for the loss. Advait takes a nice catch. Raghav has been out. The third wicket falls for Superstars. So the new player for Superstars will be Siddhant. Siddhant will join the captain of Superstars in the middle. Nicely played by Siddhant. Oh, just missed by Ayan. It would have been a run out. Score moves on to 32. Nicely played by Indrani. 33 for the loss of 3 wicket. $34. Good try by Arush. Can't stop the single. Superstar moves to 34 for the loss of 3 wicket. 35 for the loss of 3 wicket, I'm sorry. So at the end of 5 overs, Superstars are 35 for the loss of 3 wicket. 6th over will be bowled by the captain herself. Biju Thakur. No, it's not Biju Thakur, it's Advait. Very well played by Indrani. Score moves on to 36 for the loss of 3 wicket. It's a dot ball.
This time umpire says it's a wide. Score moves on to 37 for the loss of 3 wicket. A no ball and a free hit. अंपायर का इशारा, नो बॉल. And this time Siddhan hits it out of the park. It's been hit out. So Superstars are 38. 33. And the fall of the wicket is -5. So the new man in for Team Superstar is Shashwat. -22 था. नहीं सब गिन के सब इनका कैलकुलेशन करके. Okay, I think with this wicket fall, though the score is 28, but still Superstar is adjudged to be the winner for the entire match. So a big round of applause to Team Superstars. I request all the players to kindly handshake with the Team Chargers and Team Superstars. And in a short time from now, we begin our grand finale EPL 2022, the finalist team, Team Superstars and Team Chargers. So may I request our loved commentator Anil Shani to take over the proceedings. Welcome, Anil. Thank you, Gaurang. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to welcome you all on the big day, big final, EPL 2022. सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं
एक्सक्विजिट प्रीमियर लीग 2022 का ये फाइनल मैच अभी कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ओनर्स एंड स्पॉन्सर्स है ना, ये एक बाकी है। तो किधर आए क्या वो? एक बार तो अंदर जाके सब ऑर्गेनाइज करा देना, सब लोग ऐसा मैसी रहेगा। अभी ये लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन Can we just have a stop to whatever the practice happening right now? We have a prize distribution happening for the women's come kids. Let's focus on that and then we can have our other activities. Thank you. Okay. Yep. So can we have the winners and the runners-up team lined up? The winners and the runners-up women's come kids team. यहाँ पर टेबल नहीं है क्या? Okay. So, यहाँ पर लगा दो ना ट्रॉफी। Yeah. I would like to request both the captains to come here, Indrani and Mrs. Thakur. So first of all, thanks to all of you for participating. It's been nice start for the kids and women's. I hope we have next time a women's team separately and a kids team separately, right? We need more participants. But, after COVID, I think it's a nice start to have. And, the way you guys have participated and competed, it's been exemplary, honestly. Thank you so much. You guys want to have a couple of words from your side before we start the prize distribution? I will give it to Mrs. Thakur first. I just want to say congratulate to superstars. We are the best. We played. We didn't practice this time. We are the kids and the Jihan, all players, Raghav, Parth, and Kanta, and all are so good. And there's a team spirit. We won, but all the best to my team members. Thank you. I would like to invite the chairman of our society, Mr. Sunil, and the captain of the superstars, Mrs. Indrani, to come and take the trophy. Thank you and congrats, superstars, for super effort from your side. Your team has been super. I would like to invite Mr. Atul to give the winners cash amount to the team. Yep, I have it. This one.
It's superstars are being given the winners award by Mr. Atul Sinha, who's a member of the society. And the next award is for the runners-up. It's being collected by Mrs. Birju Thakur. Good luck, Chargers. Thank you so much for coming and participating. Let's have a small. Yep. Just hold on. I mean, we just want to have another photograph of you guys, if you don't mind. Congrats again to superstars. Hey Vinayak. Thank you so much, superstars, again. We will have the toss of the men's box cricket in a couple of minutes. It's being played between Chargers and the superstars. I would request the captains of the superstars and Chargers to come near the commentary box and do the toss. Umpires, if you guys can come, because we are already getting a little bit delayed in terms of time. Umpires, 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 I would request you to focus here and come here. If I can have the housekeeping guys to come and just clear this housekeeping. Okay, I would request the superstars and the Chargers captains to come here and do the toss, and let's begin the finals of men's 2022 box cricket EPL. Sunil. Yeah, ladies and gentlemen, I would request Sunil to do the toss for the finals. big match, big league, End of the day, he is the chairman big of the society. final. So superstars have won the toss and decided to bat. Let's give a round of applause and ensure that this match remains the same way as we have witnessed in the past. Hi. Thank you.
सुपरस्टार्स हैव वन द टॉस. अरे बोला ना यार. सुपरस्टार्स विन द टॉस चूज टू बैट. हम लोग फोकस नहीं कर पाते. बॉल ले रहा था इसलिए. Okay, so welcome back. Both the captains requested to give their playing team. So ladies and gentlemen, this is the most awaited moment of EPL. This is the third season of EPL, EPL 2022. And this is a big match, big final. Both the teams are fully charged up. The Superstars and the Chargers. Superstars won the toss and elected to bat first in this big final. Yes. And this will be the 12 overs match. Two bowlers will play ball 3 overs each. The final match will be of 12 overs. Just for the knowledge of both the captains and the teams. This is 12 over game. Two bowlers can bowl 3 overs. Means they have to use 5 bowlers. They have to use 5 bowlers. They can have 7 bowlers also. 3. No, like minimum तो कुछ नहीं है. Maximum yes. 3 है. Yeah, 2 bowlers can bowl maximum 3 overs. So आइए स्वागत करते हैं फिर से एक बार ये बहुत ही बड़ा मैच और जिसका इंतजार पिछले 7 दिनों से सभी लोग कर रहे थे और अलग अलग गेस वर्क चल रहा था कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी. हर वीकेंड बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही एंटरटेनिंग क्रिकेट, बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट सभी खिलाड़ियों द्वारा यहां पर हम सभी ने एक्सपीरियंस किया. और आज ईपीएल 2022 का ये आखिरी दिन और इस टूर्नामेंट का ये आखिरी मैच, फाइनल मैच. दोनों टीमें तैयार है, फुल्ली चार्ज्ड अप. और दोनों टीमें कोशिश करेंगी. सुपरस्टार्स पहले मैच से ही अपने पूरे जोश के साथ इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन कर रही है और मैं तारीफ करना चाहूंगा चार्जर्स की कि पहले कुछ मैच तक उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने जो टर्न अराउंड किया है वो काबिल तारीफ है. और अभी दोनों टीमें इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए अब मैदान में उतरी है, एक दूसरे के सामने खड़ी है. और मैच की शुरुआत में ही मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तो हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान रहेगी वही जलेगा. सो आइए शुरुआत करते हैं फाइनल्स ऑफ एक्सक्विजिट प्रीमियर लीग 2022. और ये फाइनल की पहली गेंद अर्नव. और पहली गेंद पर ये पहला रन. पवन मुंद्रा और राहुल झा दो ओपनिंग बल्लेबाज. और ये गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर. व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का. इस व्हाइट बॉल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन.
और इसे कट कर दिया है राहुल झा ने। गली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन के लिए, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 3। और ये फुल टॉस गेंद, इसे गैप में प्लेस करते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया पवन ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। 12 ओवर का ये मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा मैच। ईपीएल का ये फाइनल मैच और फाइनल मैच का ये पहला ओवर। और राहुल झा फिर से एक बार इसे गैप में खेलते हुए 1 रन दौड़कर पूरा करने का पूरा मौका बल्लेबाज राहुल झा के पास। स्कोर बढ़कर हो चुका है 5 रन। और संदीप वैद्य अच्छी कोशिश फील्ड करने की, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज पवन मुंद्रा। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 6 रन, जबकि ये पहला ओवर जारी है। अर्नव लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और इसे स्वीप करते हुए बहुत अच्छी फील्डिंग और बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट कप्तान द्वारा। और इसी के साथ ही ये पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 6 रन। जो दर्शक अभी अभी YouTube में हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये फाइनल मैच है, 12 ओवर का मैच होगा ये। और उसका पहला ओवर फेंका जा चुका है और 6 रन हो चुका है स्कोर सुपरस्टार्स का। सुपरस्टार्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और अभी पहले ओवर में बहुत अच्छी शुरुआत सुपरस्टार्स की ओर से। ध्रुव इसे ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद फील्ड होती हुई 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज पवन को। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। अच्छी गेंद ध्रुव। डेड बॉल का इशारा अंपायर का। और ध्रुव गेंदबाजी कर रहे हैं दूसरा ओवर चार्जर्स की तरफ से, राइट आर्म राउंड द विकेट। और ये बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव राहुल झा के बल्ले से निकलता हुआ 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। ये फुल टॉस गेंद, इसे गैप में खेला है पवन ने। और एक स्ट्रोक राहुल झा के बल्ले से निकलता हुआ 1 रन के लिए। स्कोर बढ़कर हो चुका है 10 रन। और प्लेस करते हुए और 1 रन बल्लेबाज पवन मुंद्रा के खाते में। 1 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 11 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर सुपरस्टार्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। उनके 2 ओपनिंग बल्लेबाज पवन मुंद्रा और राहुल झा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। धीमी शुरुआत है लेकिन बहुत ही अच्छी और सूझबूझ भरी पारी ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं। अभी चिन्मय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए चार्जर्स की ओर से। चिन्मय चार्जर्स के कप्तान और चार्जर्स को फाइनल तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान देने वाले खिलाड़ी है चिन्मय, क्योंकि कल हमने डिसाइसिव मैच जो सेमीफाइनल जिसे हमने कहा था वो उस मैच में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। Oh.
और ये स्विच हिट पवन मुंद्रा द्वारा 1 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। राहुल झा का और एक बेहतरीन स्ट्रोक, गैप में 1 रन के लिए, 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। और एक फुल टॉस गेंद, इसे फ्लिक किया बल्लेबाज पवन ने, स्कोर बढ़ता हुआ 14, 14 रन हो चुका है स्कोर। तीसरा ओवर जारी है और ये गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइट बॉल का इशारा, इस अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15, 15 रन बगैर किसी नुकसान के। और एक फुल टॉस गेंद, इसे ड्राइव किया है वहां पर अर्नव द्वारा, गेंद को रोका गया और जब तक कि गेंद को फील्ड करे 1 रन लेने का पूरा मौका बल्लेबाज के पास। और संदीप वैद्य, और ये रन आउट होने का खतरा था लेकिन मिसफील्ड, और मिसफील्ड का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज पवन और राहुल झा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, थोड़ा सा मिक्सअप दोनों बल्लेबाजों के बीच, लेकिन और एक स्ट्रोक राहुल झा का, ये डायरेक्ट हिट। और तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है स्क्वायर लेग अंपायर ने, और रन आउट का डिसीजन। Batsman is not out. और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन, 18 विदाउट लॉस एट द एंड ऑफ थर्ड ओवर। Superstars won the toss and elected to bat first. While batting, as of now, they have scored 18 runs in 3 overs without loss. पवन और राहुल झा एक काफ़ी अच्छी शुरुआत उनके टीम के लिए करते हुए, और गेंदबाज है अशोक खेडवाल, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे चार्जर्स की तरफ से। बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाएंगे ऐसी उम्मीद उनके टीम को। और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। और राहुल झा ने इसे ड्राइव किया है, स्कोर बढ़कर हो चुका है 20 रन, 20 विदाउट लॉस। और ये अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेन गेंद, इसे ड्राइव करना चाहते थे लेकिन चूके कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 20। और ये फुल टॉस गेंद, इसे गैप में प्लेस किया, नो बॉल का इशारा, अंपायर का इशारा, नो बॉल। और एक फुल टॉस गेंद, इसे गैप में खेला है वहां पर, मिसफील्ड। 3 रन की बढ़त स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन बगैर किसी नुकसान के। राहुल झा का एक आक्रामक स्ट्रोक लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 3 रन के लिए। और एक बेहतरीन ड्राइव राहुल के बल्ले से निकलता हुआ 1 रन के लिए। और कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 26 रन, 26 विदाउट लॉस। वी आर इनटू 4th ओवर ऑफ द मैच। और एक गेंद इसे प्लेस किया है वहां पर, फील्डिंग की गई लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज पवन को। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 27 रन एट द एंड ऑफ 4th ओवर। सुपरस्टार स्कोर 27 रन विदाउट लॉस। और अभी गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं प्रिय ठाकुर, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज है पवन।
और एक अच्छा ऑफ ड्राइव पवन के बल्ले से निकलता हुआ 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 28 रन। प्रिय ठाकुर गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट। अभी सामना करने के लिए तैयार है राहुल झा, सुपरस्टार्स के ये 2 ओपनिंग बल्लेबाज। और ये गेंद अच्छी गेंद थी, राहुल झा इसे ड्राइव करना चाहते थे, चूके गेंद बल्ले से टकराती हुई और इसे प्लेस किया है राहुल झा ने 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, 29 विदाउट लॉस। और एक बहुत ही बेहतरीन ऑन ड्राइव पवन के बल्ले से निकलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। और फुल टॉस गेंद, नो बॉल। सीधी ग्राउंड के बाहर मारते हुए राहुल झा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट का पतन। प्रिय ठाकुर की यह फुल टॉस गेंद थी। फ्लाइटेड गेंद जिसे फुल टॉस बनाया और हिट करना चाहते थे साइड स्क्रीन के दिशा में 6 रनों के लिए। थोड़ा सा मिस टाइम होता हुआ स्ट्रोक, गेंद ग्राउंड के बाहर जाती हुई और राहुल झा आउट होकर पेविलियन में वापस। 26 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज आए हैं आनंद और सामना करेंगे प्रिय ठाकुर की अगली गेंद का। होल्ड ऑन अंपायर, इज द लास्ट बॉल वाज काउंटेड। बॉल नॉट काउंटेड। और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर स्पिन होती हुई प्रिय ठाकुर की ये बहुत ही अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छा कमबैक कह सकते हैं चार्जर्स का। आनंद पहली गेंद इसे खेलना चाहते थे ऑफ साइड में और प्रिय की गेंद इसे मिड विकेट क्षेत्र में खेलते हुए आनंद ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 12 ओवर का ये मैच है और बहुत ही अच्छी शुरुआत राहुल झा और पवन इन्होंने सुपरस्टार्स को कराई थी, लेकिन पिछले ओवर में राहुल झा आउट होकर पेवेलियन में लौट चुके हैं। अभी पवन मुंद्रा और आनंद ये 2 बल्लेबाज सुपरस्टार्स की पूरी उम्मीद है इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर है। उनके टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर। और इसे प्लेस किया है आनंद ने, 1 रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। ध्रुव की ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, इसे स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेलते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज आनंद ने। ध्रुव गेंदबाज है चार्जर्स की तरफ से, ये ओवर फेंक रहे राइट आर्म राउंड द विकेट। और एक फुल टॉस गेंद, वहां पर अच्छी कोशिश
अच्छी कोशिश वहां पर, ये फुल टॉस गेंद थी, इसे लॉफ्टेड ड्राइव किया था बल्लेबाज पवन ने। और ये गेंद हल्के से टैप करते हुए वहां काफी अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच, एक रन दौड़कर पूरा करते हुए बल्लेबाज पवन। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। वी आर इनटू 6th ओवर ऑफ द मैच। ध्रुव बॉलिंग राइट आर्म राउंड द विकेट, 1 बॉल टू गो। और एक सेफ शॉट आई कैन से, गैप में खेलते हुए 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 32। एक विकेट के नुकसान पर 32 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है सुपरस्टार्स की टीम। पवन और राहुल ने एक अच्छी शुरुआत दी, उसके बाद राहुल के पतन के बाद अभी आनंद आए बल्लेबाजी करने के लिए। और प्रिय ठाकुर फिर से एक बार तैयार राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। और ये गेंद, और एक रन आउट होने का खतरा, रन आउट होने का खतरा वहां पर विकेट कीपर द्वारा। एक छोटी सी मिस्टेक, स्टंप करने का पूरा मौका था लेकिन गेंद उनके हाथ में नहीं आई, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रन आउट करने का चांस वो लेना चाहते थे और थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है। Decision still pending. Batsman is not out. Not out. और बहुत ही क्रूशियल डिसीजन था लेकिन बच गए। प्रिय ठाकुर के गेंद, इसे प्लेस किया है संदीप वैद्य द्वारा। बहुत अच्छी फील्डिंग। और इसे गैप में खेलते हुए एक रन दौड़कर पूरा करने का मौका बल्लेबाज पवन मुंद्रा के पास। स्कोर बढ़कर हो चुका है 34-34।
और ये फुल टॉस गेंद इसे ड्राइव किया है कवर क्षेत्र में 3 रनों के लिए। पवन मुंद्रा के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन कवर ड्राइव और इस कवर ड्राइव की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 38। एक विकेट के नुकसान पर पवन बल्लेबाजी कर रहे हैं 19 रनों पर 21 गेंदों का सामना करते हुए। एक काफी अच्छी जिम्मेदारी भरी पारी पवन द्वारा सुपरस्टार्स के लिए। और एक गेंद और बिल्कुल पवन मुंद्रा गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, क्रीज से थोड़े आगे बढ़े। इस मौका 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 फास्ट फास्ट दर्शकों में उत्साह ज्यादा और विश्वास कम। वेरी क्लोज कॉल। Batsman is out. और इसी के साथ ही इस विकेट का पतन पवन मुंद्रा का एक बहुत ही बड़ा विकेट चटकाते हुए विकेट कीपर विनायक सामंत 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 33 और विनायक सामंत जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्टंपिंग की, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। इन अ फ्लैश। और बिल्कुल ये डिसीजन पेंडिंग था, तभी मुझे शराबी का वो गाना याद आ रहा था, इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर, थर्ड अंपायर की। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा कमबैक चार्जर्स द्वारा। और एक स्कोर अभी भी रुका हुआ 33, 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन। 8वां ओवर जारी है, 7.2 ओवर का खेल हो चुका है और बहुत ही अच्छा कमबैक चार्जर्स की ओर से। और ये गेंद और इसी के साथ ही और एक विकेट का पतन। आशीष जलान इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे, स्टोक को मिस टाइम किया, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से टकराती हुई ग्राउंड के बाहर चली गई और इसी के साथ और एक विकेट का पतन। स्कोर घटता हुआ 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और बिल्कुल टीम चार्जर्स की यह खासियत है कि वो कमबैक करना जानते हैं और उसी कमबैक की वजह से, उसी कमबैक की बदौलत चार्जर्स ने इस टूर्नामेंट में भी वापसी की थी। हम सब ने उन मैचेस को विटनेस किया है, लगातार 4 मैचेस जीतकर
उन्होंने प्लेऑफ्स में प्रवेश किया था। ये गेंद और ये हल्की सी मिसफील्ड संदीप वैद्य द्वारा। और एक रन, स्कोर बढ़ता हुआ 29, 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 30 हो चुका है स्कोर, माफ कीजिए 30। कुणाल कर्णिक और ये गेंद इसे कट करना चाहते थे, चूके गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति पर 12 ओवर का ये मैच है। अभी भी 24 गेंदें शेष है इस मैच में, इस इनिंग में। इन 24 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे आनंद बलदावा और कुणाल कर्णिक। और फिर से एक बार अपना निजी दूसरा और अपने टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आ रहे हैं अर्नव। और ये फुल टॉस गेंद, वहां पर एक कैच छूटता हुआ। और इसे लेट कर करते हुए 1 रन के लिए, 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। और वहां पर मिसफील्ड, डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। 1 रन के लिए, 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 34। 3 विकेट के नुकसान पर कुणाल कर्णिक और आनंद बलदावा बल्लेबाजी कर रहे हैं। और चूंकि गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेलना चाहते थे, थर्ड अंपायर की तरफ रुख करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर। Batsman is not out. Please continue. बॉल डेड केलं सांगा अभी लास्ट डिलीवरी डेड बॉल It's a fair ball. Please continue. आहे ना क्रीजच्या इथे लागलं सर हार्ट बीट नहीं हुए तो बॉल डेड हो गया, देखा? Umpire wait. Last ball dead दिया? नहीं दिया ना? It's okay. It's a fair ball. और इसे प्लेस करते हुए कुणाल कर्णिक 1 रन के लिए दौड़ते हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। वी आर इनटू 9th। अरे डाला बॉल उसने, अरे तोच है। और 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 35, 3 विकेट के नुकसान पर। कुणाल कर्णिक और आनंद बलदावा, 2 बल्लेबाज सुपरस्टार्स की ओर से। इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी इन बचे हुए 3 ओवर्स में अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की। ये फाइनल का मैच है और दोनों टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी है। और चार्जर्स की टीम का मैं कह सकता हूं बहुत ही अच्छा कमबैक इस मैच में। इस मैच की शुरुआत में हमने देखा कि राहुल झा और पवन मुंद्रा ने काफ़ी अच्छी ओपनिंग साझेदारी करते हुए एक बहुत ही अच्छा स्कोर, एक अच्छी शुरुआत दी थी अपनी टीम के लिए। लेकिन उसके बाद
बैक टू बैक 3 विकेट लेकर टीम मैच में अच्छी वापसी करती हुई चार्जर्स की टीम। और अभी सुपरस्टार्स 9 ओवर की समाप्ति पर 35 रन बना चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अशोक खेडवाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, सामना करने के लिए तैयार है आनंद बलदावा। राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये फुल टॉस गेंद, इसे ड्राइव किया शॉर्ट मिड वेट क्षेत्र में जाती हुई गेंद 1 रन के लिए, 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 36। और एक फुल टॉस गेंद कुणाल कर्णिक द्वारा इसे प्लेस कर दिया गया स्क्वायर लेग क्षेत्र में जाती हुई गेंद 1 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 37। और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर बढ़कर हो चुका है 38। और ये फुल टॉस गेंद, इसे ड्राइव किया आनंद ने और वहां पर थ्रो, ओवर थ्रो हो चुका था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज आनंद और कुणाल कर्णिक। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 39। और इसे लॉफ्ट करते हुए डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद 2 रनों के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 41 3 विकेट के नुकसान पर। अंपायर का इशारा, नो बॉल। अरे अशोक, बस थोड़ा आराम से डालना। आराम से डाल थोड़ा। ओह, 44, 1 ball to go। और एक ड्राइव 1 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 45 एट द एंड ऑफ 10th ओवर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 ओवर्स, 3 विकेट्स, माफ कीजिए 10 ओवर की समाप्ति पर। और आखिरी 2 ओवर्स, ये पावर प्ले का ओवर यहां पर अभी फेंका जाएगा। और इससे पहले दिस इज रेगुलर ओवर, पावर प्ले नहीं लिया है। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुपरस्टार्स और अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रिय ठाकुर द्वारा अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकते हुए, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 45। अंपायर का इशारा, नो बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 47। और इसी के साथ ही आनंद बलदावा
कैच आउट होकर पेवेलियन की ओर वापस जा रहे हैं। स्कोर घटता हुआ 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ग्रेट ग्रेट। यस, और ये इसे ड्राइव किया है गैप में। प्रिया ठाकुर राइट आर्म राउंड द विकेट, और इसे टैप करते हुए डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। इसी के साथ ही 11वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 46 4 विकेट के नुकसान पर। और ये कंपलसरी पावर प्ले का ओवर इस मैच का, इस इनिंग का ये आखिरी ओवर है। 12 ओवर का ये मैच है। एक्सक्विजिट प्रीमियर लीग 2022 का ये फाइनल मैच। चिन्मय लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और इसे टैप करते हुए 1 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 48 4 विकेट के नुकसान पर 48 रन। जबकि ये आखिरी ओवर है, 5 गेंदें शेष है। भाविक ठक्कर, ये बहुत अच्छी गेंद, इसे डिफेंसिव अंदाज में खेलते हुए भाविक टक्कर, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 48। चिन्मय सिंह भी अच्छी गेंदबाजी, और ये गेंद, और इसी के साथ ही विनायक सामंत द्वारा और एक -10, स्कोर घटता हुआ 38। काफी अच्छा कमबैक। विनायक सामंत विकेट कीपर, क्रेडिट गोज टू बॉलर एंड विकेट कीपर। और खड़े खड़े स्टंपिंग करते हुए हम सबको पुष्पा की याद दिला रहे। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, उस अंदाज में स्टंपिंग करते हुए विकेट कीपर विनायक सामंत। अच्छी वापसी, 5 विकेट के पतन के बाद स्कोर हो चुका है 38 11.3 ओवर में। (38) 11.3 ओवर्स। और चिन्मय की गेंद, इसे ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, कोई रन नहीं। और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर निकलते हुई अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी 2 गेंदें शेष है इस इनिंग की। सौरभ अग्रवाल कप्तान सुपरस्टार्स के बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदें हैं उनके पास। और एक अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त रन, 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 42।
डॉट गेंद और ये इनिंग की आखिरी गेंद। जोरदार अपील। इसी के साथ ही 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 43 रन्स टू विन दिस मैच। और बहुत ही बेहतरीन कमबैक चार्जर्स की टीम का। एक समय पवन मुंद्रा और राहुल झा ने बेहतरीन शुरुआत दी थी सुपरस्टार्स को, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरते गए और स्कोर घटता गया और 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। राहुल झा जिन्होंने 15 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन बनाए, पवन मुंद्रा जिन्होंने 22 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बनाए, आनंद बलदावा 15 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन, आशीष जलान अपना कुछ योगदान नहीं दे पाए, कुणाल कर्णिक जिन्होंने आखिर तक बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों का सामना करते हुए 14 रनों का योगदान दिया और इसकी बदौलत सुपरस्टार्स का स्कोर हो चुका है 42 रन। 43 रन्स टू विन दिस मैच। चार्जर्स को ये बहुत बड़ा मैच है, ये फाइनल का मैच है, फाइनल का प्रेशर है और बड़ी संख्या में दर्शक यहां पर और अभी शुरुआत होने जा रही है। चार्जर्स 43 रनों का लक्ष्य चेस करने के लिए उनके दो ओपनिंग बल्लेबाज अर्नव और प्रिय ठाकुर, दो बल्लेबाज चार्जर्स की तरफ से। अब तक के सभी मैचेस में प्रिय ठाकुर और अर्नव ने बहुत अच्छी शुरुआत दी है। ये फाइनल का मैच है और आज ये इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच। कुणाल कर्णिक गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये पहली गेंद इसे टैप कर दिया है बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से होती हुई, 1 रन के लिए। प्रिय ठाकुर का ये स्ट्रोक मिड विकेट क्षेत्र में गेंद फील्ड होती हुई 1 रन के लिए, 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक ऑफ ड्राइव लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्ड होता हुआ 1 रन के लिए। और ये अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आती हुई, इसे ड्राइव करना चाहते थे, चूक के कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 3 रन।
स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। अंपायर का इशारा, नो बॉल। अच्छी फील्डिंग आनंद बलदावा, लगातार शॉर्ट मिड ऑन क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 6 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रिय ठाकुर और अर्नव, 2 ओपनिंग बल्लेबाज चार्जर्स की तरफ से। 6 रन हो चुका है स्कोर, 6 विदाउट लॉस। और पवन आए हैं नया ओवर लेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामना करने के लिए तैयार है अर्नव। और ये अच्छा स्ट्रोक, वहां पर अच्छी फील्डिंग और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज अर्नव को। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। और एक अच्छा स्ट्रोक, अच्छी कोशिश, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बगैर किसी नुकसान के। और एक ऑन ड्राइव 1 रन के लिए, फील्ड होती हुई गेंद। और गेंद हवा में, इसी के साथ ही पहले विकेट का पतन। प्रिय ठाकुर इस गेंद को गैप में खेलना चाहते थे, स्ट्रोक मिस टाइम होता हुआ उनके बल्ले के ऊपरी सिरे से टकराती हुई गेंद शॉर्ट मिड ऑन क्षेत्र में आनंद बलदावा द्वारा एक बेहतरीन कैच, और इसकी बदौलत प्रिय ठाकुर आउट होकर पेविलियन में वापस। स्कोर घटता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर जारी है। और नए बल्लेबाज चिन्मय, कप्तान चार्जर्स के, कल एक बहुत ही बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलने के बाद आज फाइनल में पहली बार सामना करेंगे पवन की इस ओवर की अगली गेंद का। 1.4 ओवर का खेल हो चुका है, स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और एक चिन्मय का बहुत ही अच्छा ऑफ ड्राइव 1 रन के लिए, 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। और दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ सेकेंड ओवर। और भरत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामना करने के लिए तैयार है अर्नव। ये फुल टॉस गेंद, इसे ड्राइव किया, बहुत अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। और एक फुल टॉस गेंद, इसे खेलते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद फील्ड होती हुई 1 अंपायर का + 1। इशारा, नो बॉल। और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था, अच्छा प्रयास पवन मुंद्रा द्वारा। और एक ड्राइव, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
बहुत अच्छी फील्डिंग, आनंद बलदावा बार बार लगातार लॉन्ग शॉट मिड ऑन क्षेत्र में, बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। अंपायर का इशारा, नो बॉल। बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। और इसे खेलते हुए शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में गेंद जब तक के फील्ड हो, 1 रन लेने का पूरा मौका बल्लेबाज अर्नव के पास। और इसे गैप में खेला है चिन्मय ने और 1 रन की बढ़त। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ थर्ड ओवर। 12 ओवर का ये मैच है। ये ओवर समाप्त। अभी 9 ओवर शेष है, 54 गेंदें, 54 बॉल्स, और ये मैच जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। 31 रन्स इन 54 बॉल्स टू विन दिस मैच। और सौरभ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे, सामना करेंगे चिन्मय। चेंज ऑफ एंड। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इसे डिफेंसिव अंदाज में खेलते हुए चिन्मय। नो बॉल। अंपायर का इशारा, नो बॉल। अगर ये लोग दोबारा प्रोटेस्ट करें ना, आपको बोल देने का। यस। और इट्स फ्री हिट की गेंद, वेरी फॉर्चुनेट। फ्री हिट की ये गेंद थी और बाल बाल बचते हुए चिन्मय। चिन्मय की ये विकेट बहुत ही कीमती विकेट है। चार्जर्स के लिए बहुत अहम बल्लेबाज चिन्मय। स्कोर अभी भी रुका हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये ड्राइव चिन्मय का, वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग पवन द्वारा। 1 रन, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज चिन्मय को। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ 3.3 ओवर्स। 3.3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अर्नव ने इसे ड्राइव किया है 1 रन के लिए। और एक बहुत अच्छा स्ट्रोक, अनफॉर्चुनेटली नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज से टकराता हुआ, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन। और इसे प्लेस करते हुए गैप में 1 रन के लिए 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 16 रन, 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ 4th ओवर। अभी भी 8 ओवर शेष है। 43 रनों का लक्ष्य है। टारगेट इज 43 रन्स टू विन दिस मैच। एज ऑफ नाउ चार्जर्स स्कोर्ड 16 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ 4th ओवर। Still 48 balls in their hand and they required just 27 runs to win this match.
पवन आ रहे हैं नया ओवर लेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामना करने के लिए तैयार है चिन्मय। ये फुल टॉस गेंद, इसे ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद फील्ड होती हुई 1 रन लेने का पूरा मौका बल्लेबाज के पास। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। वी आर इनटू 5th ओवर ऑफ द मैच। अर्नव का एक ड्राइव, वहां पर अच्छी फील्डिंग कुणाल कर्णिक द्वारा, कोई रन नहीं। और पवन की एक गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी स्पिन होती हुई, अर्नव इसे मिड विकेट क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन चूंकि गेंद विकेटों से टकराती हुई और इसी के साथ अर्नव क्लीन बोल्ड आउट होकर पेविलियन में वापस। स्कोर घटता हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज आए हैं ध्रुव। स्कोर हो चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 4.3 2 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए, 4.3 गेंदें हो चुकी है 4 ओवर और 3 गेंदों के बाद, 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा स्ट्रोक, कवर ड्राइव 1 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 13, अभी भी 30 रनों की जरूरत। और चिन्मय से ड्राइव करते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी पवन मुंद्रा द्वारा। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पवन मुंद्रा काफी बेहतरीन गेंदबाजी, 2 ओवर में 8 रन देकर 2 सफलताएं हासिल करते हुए पवन मुंद्रा अपने टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए इस फाइनल मैच में और डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद 2 रनों के लिए, 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और एक स्ट्रोक, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज चिन्मय को। और 1 रन लेने का पूरा मौका है बल्लेबाज ध्रुव के पास। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5.3 ओवर का खेल हो चुका है। और ये फुल टॉस गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, 4 रनों के लिए चिन्मय के बल्ले से निकलता हुआ और एक बेहतरीन स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा स्ट्रोक और काफी अच्छी एग्रेसिव बल्लेबाजी चिन्मय द्वारा।
अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग पवन। और एक स्ट्रोक चिन्मय के बल्ले से निकलता हुआ ये, और एक बेहतरीन चौका, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद। 26 हो चुका है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर 26 रन, और ये मैच जीतने के लिए अभी 17 रनों की जरूरत। 17 runs to win in remaining 6 overs, 36 balls, 17 runs. चिन्मय कूल डाउन, चिन्मय आराम से, चिन्मय। (26) for the loss of 2 wickets at the end of 6th over. 36 गेंदें और 17 रनों की जरूरत। ध्रुव और चिन्मय दो बल्लेबाज चार्जर्स की ओर से। और 1 रन के लिए खेलते हुए ध्रुव। और अभी चिन्मय आए सामना करने के लिए सौरभ अग्रवाल। अगला ये ओवर की अगली गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर है 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और फ्लाइटेड गेंद थी, ललचाई हुई गेंद, वहां पर मिसफील्ड, और इस मिसफील्ड का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज चिन्मय 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए 28 रन हो चुका है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी ये मैच जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। 15 रन्स टू विन इन 34 बॉल्स। आराम से चिन्मय, कूल डाउन। क्या कर रहा है? 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पंद्रह रनों की जरूरत। ये गेंद और अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी बल्लेबाज ध्रुव द्वारा। और अच्छा कवर ड्राइव, 1 रन के लिए, 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। 1 बॉल टू गो, 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। एक गेंद शेष, ये 7वां ओवर जारी है। 12 ओवर का ये मैच है। 43 रनों का टारगेट है। ईपीएल सीजन 3 का ये फाइनल मैच।
और एक रन दौड़कर पूरा करते हुए बल्लेबाज ध्रुव। 30 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। 30 balls and 12 runs to win this match. Chargers chasing target of 43 runs to win this match. As of now, they have scored 31 runs for the loss of 2 wickets at the end of 7th over. स्कोर हो चुका है 31, 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर हो चुके हैं। 30 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। 30 balls and 12 runs to win. जैसे प्लेस करते हुए एक रन दौड़ रहे हुए बल्लेबाज ध्रुव। स्कोर बढ़ता हुआ 32, 2 विकेट के नुकसान पर। चिन्मय आए हैं सामना करने के लिए राहुल झा की अगली गेंद का। चिन्मय 19 गेंदों में 20 रन बना चुके हैं। और डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद 2 रनों के लिए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34। टारगेट से और नजदीक आती हुई चार्जर की टीम। अभी 9 रनों की जरूरत। 28 गेंदों में 9 रन। अच्छी गेंद। और ये फुल टॉस गेंद थी। थर्टी 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और इसे कट कर दिया है। गली क्षेत्र में जाती हुई गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ 36, 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 7.5 ओवर का खेल हो चुका है। एक गेंद शेष इस ओवर की। और एक बेहतरीन स्ट्रोक। राहुल झा की ओवर की आखिरी गेंद थी, इसे ड्राइव किया। और ये पावर प्ले। पावर प्ले का ये ओवर। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 37, 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 43 रन्स का टारगेट है। अब तक 37 रन बना चुकी है चार्जर की टीम। और ये पावर प्ले का ओवर है, बहुत ही क्रूशियल ओवर इस मैच का। पवन गेंदबाजी कर रहे हैं। 37 हो चुका है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति पर। 5 रन्स रिक्वायर्ड इन 4 ओवर्स। 6 रन्स, माफ कीजिए, 6 रन। हाँ, सुपर ओवर। और
रन, 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 39। अच्छी कोशिश भरत द्वारा। और 1 रन दौड़कर पूरा किया। डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद नहीं, स्कोर बढ़ता हुआ 41। और ये फ्लाइटेड गेंद थी, इसे ड्राइव करना चाहते थे, चूके कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 41, 2 विकेट के नुकसान पर। और 2 रनों के लिए ये स्ट्रोक, और इसी के साथ ये टारगेट चेस हो चुका है। 43 रन्स का टारगेट था, टारगेट चेज हो चुका है चार्जर्स की ओर से। चिन्मय एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इनिंग अपने टीम के लिए खेलते हुए। अब स्कोर बोलते जा। और पावर प्ले की 2 गेंदें शेष है अभी। 2 balls to go in this over. This is the power play over of this inning. ड्राइव करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 45। एक गेंद शेष है। और एक स्ट्रोक, और ये 6 रन, 6 रन मिलते हुए इस गेंद पर स्कोर हो चुका है 51। 51 रन हो चुके हैं कितना 9 ओवर की समाप्ति पर 51। 8 रनों की लीड। (51) देयर +9, 42 रन बनाए थे सुपरस्टार्स ने। अभी 51 हो चुका है चार्जर्स का स्कोर। इसका मतलब 9 रनों की बढ़त है चार्जर्स के पास। अभी 3 ओवर शेष है, 18 गेंदें। ध्रुव और चिन्मय एक काफी अच्छी इनिंग, अच्छी साझेदारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। और ध्रुव ने ड्राइव किया है वहां पर, थोड़ी सी मिसफील्ड, और 1 रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज ध्रुव ने। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 52। 52 रन हो चुका है स्कोर। 52 + 10, 10 रन आगे। और चिन्मय का ये और एक स्ट्रोक, वहां पर 1 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 53। और ध्रुव का ये ड्राइव, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। 3 रनों के लिए, 3 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 56। 14 रनों की लीड, चार्जर्स लीड बाय 14 रन्स।
और थोड़ा सा मिस टाइम होता हुआ स्ट्रोक। और इसे प्लेस करते हुए ध्रुव 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। 57, 1 ball to go. This is 10th over of this inning. इसके बाद और 2 ओवर फेंकने शेष। 57, डिफेंस से औंधा, और इसके साथ ही ये ओवर समाप्त। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 57, 2 विकेट के नुकसान पर, और चार्जर्स 15 रनों से लीड करती हुई। दे आर अहेड ऑफ 15 रन्स अहेड ऑफ देयर टारगेट। 42 रनों का स्कोर सेट किया था सुपरस्टार्स ने। 43 रन्स का टारगेट था, और वो टारगेट चेस करने के बाद 15 रन एक्स्ट्रा बना चुकी है सुपरस्टार्स चार्जर्स की टीम। चिन्मय और ध्रुव बहुत ही जिम्मेदार पारी उनकी टीम के लिए, और ये मैच का, ये इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच, और काफी और सौरभ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, कप्तान। स्कोर हो चुका है 57। और ये गेंद थोड़ी तेज आती हुई। फर्स्ट डॉट बॉल, फर्स्ट डॉट। एक रन दौड़कर पूरा करते हुए 58 हो चुका है स्कोर, 58 रन। चिन्मय सामना करने के लिए तैयार है, और ये फ्लाइटेड गेंद, इसे ड्राइव किया 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 59। 59, ये 11वां ओवर जारी है, 11th ओवर ऑफ दिस इनिंग। और एक अच्छा स्ट्रोक, और वहां पर अच्छा थ्रो था, बाल बाल बचते हुए। ध्रुव, स्कोर हो चुका है 60 रन हो चुके हैं। 2 balls to go. (61) नो बॉल का इशारा, अंपायर का इशारा, नो बॉल। 62। और 3 रन प्रेशर, फाइनल का प्रेशर, और 3 रनों की मदद से 65 रन हो चुका है स्कोर। और ये इस टूर्नामेंट का, इस मैच का लास्ट ओवर। This is the last over of this match. Chargers are on 65.
65. 6 balls to go. 65 runs. You have 23. You are leading by 23 runs. और चिन्मय का यह स्ट्रोक 1 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 66. 24 रन आगे है टीम. 5 गेंदें शेष है. अगर इन बची हुई 5 गेंदों में 5 विकेट गिरते हैं तो एनीथिंग कैन हैपन. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अननेसेसिटी. और ये विकेट का पतन. 61 स्कोर घटता हुआ. 4 गेंदे और उन्नीस ना 19 चाहिए ना. 19. दे आर प्लस 19. अशोक खेडवाल जी आए हैं. और 1 रन. 3 गेंदें शेष है. 3 balls to go. And Chargers are 20 runs ahead of their target. और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रनों के लिए. 6 रनों के लिए बोला ना. और चिन्मय बैटिंग ऑन 44. दो गेंदें शेष है. 33 गेंदों में 44 रन. चिन्मय और ये 50 रन पूरे. ग्रेट नॉक बाय चिन्मय सिंघवी. और चिन्मय सिंघवी का ये बहुत ही बेहतरीन नॉक उनके टीम के लिए. और ये आखिरी गेंद. और इसी के साथ ही चार्जर्स विनर्स ऑफ EPL 2022. Great game of cricket. Superstars, great show, great display of cricket. Well played both the teams. Superstar, great show. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. Chargers, congratulations. Great show by Chinmay. He scored 51 runs in this final match.
Okay. Good evening, residents of Exquisite and the players in the EPL 2022. Um, excuse me. Excuse me. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, can I have a first of all a round of applause to the entire Exquisite residents for such a nice event. हाँ हाँ मैं everybody. Okay. Should we? How are you, man? How are you, man? Okay, can we have some attention here, please? हाँ? अरे सब वीडियो आ रहा है ना? सब पूरा वीडियो आ रहा है ना? नहीं ना होगा वो। खत्म करो भाई। हाँ? शुरू करते जी को बोलो लेके आएंगे सबको ऑलरेडी कंप्लेंट्स आ रहे हैं। नहीं होना है क्या पता लोगों कौन ने क्या काम लंबा चौड़ा मेल है Okay. How are you, sir? Long time. Yeah. आप बता देना कौन हाँ ये पे लिखा रहेगा मैं बोलती हूँ सिर्फ दिगंबर को बराबर ना आई थिंक इन आवर एमसी हाँ इन आवर एमसी इज द सीनियर मोस्ट मेरे हिसाब से मैं और किसी को सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट वही बनता अच्छा कम से कम ऐसे मुंह पे प्यार रखने के लिए तो बोल दो प्यार करता हूँ आपसे ऐसे कुछ तो बोलो रेस्पेक्ट आपका ही
Um, can the team just come across this side because the camera is on that side, so it will be better if you guys can just come to the other side. Yeah. Both Chargers as well as Superstars. If you could just come to the other side, because they are not able to capture your face. Yep. Chargers, if you could just come to the other side, please. And all the residents of Exquisite, whoever is in the multipurpose court, if you could just come to the other side, please. Yeah. Yeah. Okay. All the residents of Exquisite, if you guys just come to the other side, please. Move to the other side, please. डॉक्टर निखिल आप थोड़ा सा इस साइड आ जाइए प्लीज थोड़ी देर के लिए and kids who are playing there, can you come to this side please for some time. Okay, so let me first start by thanking the sponsors. Okay, let's give a round of applause to the sponsors, the MSF, the Darwin, and the YRS Exports. Without them, this tournament could not have been what it has been, honestly. Okay, the scale which they have brought up to the society is commendable. And then let me start by also, before I thank the winners, let me first thank the participants. Okay, without the participants, the winners would not have been anything. The participants has been extremely super in their games, their sportsmanship, and the way they have displayed their skills. It looks like we could be playing another tourney in the next 2 weeks, honestly. And the passion and the enthusiasm has been super. Before I start anything else, first let me thank the management committee. The management committee has been gracious to allow us to play this box cricket in the multipurpose court, even though the multipurpose court is not supposed to be, cricket playing stuff, but they have been extremely supportive and cooperative, and they understand the enthusiasm with where we come from. Let me start by thanking the organizing team, starting with the mentor, Sunil Singhania. Sucharita, unfortunately, she is not there, but let me announce you, even though she is not there, she's won 2 gold medals for Maharashtra in the last 2 days. She has won the 100 meters yesterday, and she has won the shot put today. And then Sandeep Vaidya, Amrish Javeri, Pavan Mundra, Rupendra Soni, Balu, and Michael, and who can forget Shaili? Okay. And a round of applause to all the spectators. The residents without whom this tourney would not have been what it has been. Amazing, extremely vocal, and sometimes one-sided. And it was seen today. This is the 1983 World Cup. And I told a few days back that, there's this guy, Kunal, who told me that most of the guys, they hate our team. I said, they don't hate you. Honestly, you are the West Indies. The 83, there was this Srikanth, he was telling one of his teammate, boss, तुम लोग team के बारे में बात कर रहे हो क्या horror story बता रहे हो? There is this Rahul, he says, नाम तो सुना ही होगा. And then the Tendulkar of
our society. Pavan Mundra. I mean, this guy is amazing, honestly. The passion and, I mean, I don't know, I mean, the stress which he takes, I don't think anybody can take. I mean, he just goes to a different level when he's playing the cricket. And then Sorrow, who can forget? Last time, unfortunately, he was under Corona, quarantine, and he was there only for the finals. And he was telling me, why Rahul is in category 1. I mean, he's never played box cricket. I said, all I know is Ashok said, this guy is just too good. And he just showcased. I mean, he is just too good. Rahul, you too good, honestly. And the way you guys have played, this was the 1983 World Cup West Indies team. Honestly, the Indian team might have, but honestly, you were the West Indies. For me, I mean, the way you guys have played, you had the Vivian Richards, you had the, Malcolm Marshall and the Joel Garner and the Holdings, but you were just too good. And finally, let me also thank the DJ, the JLL staff. Specifically, I would like to mention Dhiren of JLL. He has been super. And he stays, he actually travels 2 hours to go back to his house. Every day. He's just been too good. And the cameramen, the scorers, the umpires, the LED team. And let me also start by finally thanking a guy who's a resident of our society, Balu. Has been the source behind all this, live, the camera. Okay. He's a new entrant to our EPL committee along with Michael. But these 2 guys have been always stressing on only the technology. And today we found out why technology is so important for us, because this tournament had very less, controversies in terms of the decision, primarily because, these guys ensured that we don't have 1 or 2 cameras. They had 6 cameras, and Balu himself has put 2 cameras from his, side, and his 2 men, just to ensure that we have a better tournament. And at this point of time, I would like to invite Saurav Agarwal just to come and say a few things. I think right from the start, the kind of passion that superstars have shown was outstanding. The kind of commitment each and every player was showing. एक अलग सी एनर्जी आ जाती है जब ऐसे टीम मेंबर्स होते हैं. And that is what, in fact, the turnaround in our entire team happened because of our first match against Chargers, जो एक बहुत close match हुआ था. उसके बाद में टीम में एक अलग एनर्जी आ गई थी कि हम तो जीतेंगे. And today there was a turnaround. I think full points to and Chinmay. Fantastically played, yeah. Fantastically played. I would like to thank Shankar for inviting me to be a owner, to be a captain, to play. Otherwise, I would have missed making so many friends this side. This is more of a festival. Honestly, I had forgotten. हम वर्कआउट कर लेते थे, लेकिन ये जो क्रिकेट के वजह से जो अंदर का जो फीलिंग आता है ना, जो एनर्जी आती है ना, the energy that we take back to our lives, in our personal lives, in our professional life, is just amazing that I want to do this every quarter, every 6 months. Once again, thank you superstars, thank you managing committee for an amazing tournament. Thank you so much. So before we start the presentation, I would also like to mention special thanks to the Tejas Murarka, the guy who's been behind all our t-shirts and the costumes which we are wearing. He's been extremely cooperative, and I think he actually goes out of pocket, honestly. The way we
come and ask him so many things, but he's always said, no, what is your budget? I said, boss, we don't have a budget. So, but he says, no, don't worry. So, thanks to Tejas, a round of applause to you. Thank you. Okay. So we'll just start by, first calling the referees, the umpires. If the umpires could just come here and collect their money from our side. And I would request Mr. Digambar, Colonel Digambar, to come and give the prizes to them. All the 4 umpires, if they could just come. The umpire comes scorers. Thanks to you guys. It's been a super tournament. Thank you so much, man. Fourth one, हो गया? Huh? Kalpesh. Okay. So there's a team, one of the members from Selective Warriors. He might not have qualified for the semis or finals, but he was super throughout the 6 matches which he played. Kalpesh Thakur for the best average. He had an average of 105. Michael, if you could just come. Michael. Okay, the first hat-trick of our EPL. Samir Patkar. Samir, if he is there, and I would like to request Mr. Shashi Kedia. Mr. Shashi Kedia, if he is there. Mr. Shashi Kedia, if you could just come and give the honor. Okay, I mean, the first round of this round robin, if you could see, the team had lost 3 matches consecutively. So we decided to have the best comeback team of the tournament, and it unfortunately or fortunately goes to the Chargers, the winners of this tournament. And I would like to request Mr. Amrish Javeri, Mr. Amrish, to just come and hand over the prize to him. Okay. So as I said, superstars may have been the runner-up, but they were the real West Indies, honestly. And the maximum wins in the round robin was 5. And I would like to request Mr. Saurav to come and take the maximum wins in the round robin. Mr. Saurav, and I would like to call Dr. Nikhil, Dr. Nikhil, if you could just come and do the honors. Thank you. Okay. Rahul, naam to suna hi hoga. The best fielder of the tournament, without doubt, was Rahul Jha. And I will request Mr. Atul Sinha, if he is there, Mr. Atul, if you could just come and do the honors. Sir, firstly, thank you for the honor of giving me the best fielder. But I think I was at the right place at the right time. But the true best fielder is Anand, so I would want him to come and collect this award. I think you are the true fielder, man. What you do, I can never do. Yeah. Thank you so much. In 2011, the man of the match was adjudged as MS Dhoni. He said it should have been the other guy.
Okay, the best wicket keeper goes to Praveen, if he is there. Praveen. Okay. Praveen, Adi, if you are coming to collect. Okay, I would request Mr. Manoj Kesri to do the honors, please. Mr. Manoj. The next one is the maximum force. So now it goes to all the Singhvi Parivar. It starts with the maximum force, Chinmay Singhvi to be Shaili Jha to do the honors. I know. Yeah. The next one is maximum 6. I mean, you don't have to leave. Just hold on. Maximum number of 6. Alu, if you could just come and do the honors for the maximum 6. The best bowler, Mr. Rupender, if you could just come to the honors, Chinmay Singhvi again. Mr. Rupender Soni. To Chinmay. Okay, the maximum runs, the only guy who scored 200 runs in this tournament is Chinmay. And this will be, I would request Ms. Sunita Sharma if she is there. Ms. Sunita. Okay, the best all-rounder again for his all-round performance. Again, Shambhu Sharma, if he can just come and do the honors. Okay, the next one is the next one is the man of the series. I would request Mr. Atul Sinha to come. It's a prize of 5,000 rupees to Chinmay. Okay. The next one is the man of the finals. I would request Mr. Nagarajan if he is there. Mr. Nagarajan. So, okay. So I would request Mr. Chinmay to just and say a couple of words because I think he's collected enough money. To start off, I need that shoes. Firstly, Saurabh and team well played. We actually needed a lot to defeat you guys. We couldn't in the practice matches and the warm-ups also we were beaten very badly. But speaking about the character of the team, we were down and out first weekend. 3 matches in a row we've lost, and we had the worst run rate. And that is where I would like to thank the owners, Sunil uncle and Ashok uncle, to give us the freedom that still go ahead and play. And to the 3 kids in my team, now prove fabulous effort, fabulous to do a turnaround. They've given me the foundation to play freely, and amazing guys. Vida, keeper, Sandeep and Balu, I know you've not gotten a chance to bat ball, nothing, but to be there every day on time, thank you so much. Ashok ji, thank you so much for keeping the ground, keeping the funny moments alive in the team even though you're losing. Thank you so much. Thank you, Shankar. Thank you, committee. Thank you so much. Okay. Now, ladies and gentlemen, the big one is coming up. The runner-up
of EPL 2022 superstars. Tuk, 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 tuk. Please come forward, team superstar. I would request Mr. Shankar to give away the prize money of rupees 20,000 rupees. Great show. जैसे मैंने कहा कि भले आप लोगों ने ये ट्रॉफी दी है, लेकिन you have won the hearts of the cricket lovers. Great show. Great game of cricket. Hello. Congratulations. Good show. Well played. So I would request now Sunil and Ashok to come, the owners of the Chargers. You can take the trophy and give it back to your team, but before that, I would like to have a couple of words with the mentor of EPL and the owner of Chargers, Ashok. Yes, thank you very much. Especially all my Chargers teams and management team. Those are giving opportunity to play very well. And once again, thank you very much, everybody. Come on, Chargers! I and Ashok have taken so many teams, we have never won anything. So this is the first time we are winning anything. So it is a very happy moment. So thanks a lot. But I think the good thing is that, we had a good team mix of youth and some senior people. The only good thing was that even when we were losing, we were not out. And I think that is what life is all about. There are always ups and downs in life. There are always a good day. I was telling Vinay, aaj jeete, aaj maja kar lo, kal ho na ho. So, you have to basically enjoy every moment of the life which gives you happiness. And I think the good thing is last 3 weeks, I think our wonderful society has given us so many moments of happiness. I think that is the biggest achievement of any tournament which can. Thanks everyone. Shankar has already mentioned all the names. Thanks everyone. And we cannot forget Thalaiva. I think 3 cheers to Shankar. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Thank you. Now I would like Chinmay to come and take the trophy. And I would request you to actually do the donors. Come. Okay, ladies and gentlemen, please put your hands together for Team Chargers, the winners of Exquisite Premier League 2022. Come on, everyone! With the beats! DJ Bravo, DJ Bravo, champion, 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 champion. Everybody knows it, Bravo, a champion, 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 champion. And cash prize is 40,000. Champions. Well played team. और बिल्कुल ये मैच का आखिरी प्राइज और बड़ा प्राइज टीम चार्जर्स को जाता है. Great show. We are signing off from here. Thank you so much, everyone. Thanks for your cooperation. And congratulations once again. Thank you. Dhanyavad.